Hello everyone, welcome to J Study Center. Thank you so much viewers for your likes for our previous video. Today we are going to start the fifth mock test of CPUT Political Science. CPUT Common PG Entrance Test ର Political Science ର fifth questions practice रे आज आमे पहुंची अछु ଆଉ थैंक यू समस्त viewers ମାନଙ୍କୁ आमर प्रीवियस वीडियो गुडी को रेस्पॉन्स करिथिबारु. So let us discuss the main topics and the questions. Today's questions, the first question is here: when was gender mainstream adopted as official UN policy by the UN General Assembly? Gender mainstream UN General Assembly रे UN policy आकार रे केबे adopt करा जाई थिला. So the answer is here option number A, 1980. The actual answer is in 1980 gender mainstreaming adopted as official UN policy by the UN General Assembly. Then the second question. The second question is here: 14th SAARC summit held in New Delhi in 2007 stressed on SAARC summit जो होइथिला 14तम SAARC summit न्यू दिल्ली रे 2007 मसीहा रे विशेष करी काहा उपरे गुरुत्व प्रदान करिथिला. So here the answer is improving इंट्रा-रीजनल कनेक्टिविटी. यह कहा ऊपर विशेष कर गुरुत्व देइथिला इंट्रा-रीजनल कनेक्टिविटी ऊपर विशेष गुरुत्व देइथिला. जो सार्क नेशंस गुडी कर रही अछंती सेमानकर इंट्रा-रीजनल कनेक्टिविटी ऊपर एही समिट विशेष गुरुत्व देइथिला. देन नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज कबीर इज कंसीडर्ड अ पॉलिटिकल थियोरिस्ट बिकॉज कबीर को जड़े राजनीतिज्ञ बा राजनीति शास्त्रज्ञ बोली कहा जाए कहीं बिकॉज ही क्वेश्चंस बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज. से कौन करथिले क्वेश्चन करथिले बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज ऊपर माने कास्टिज्म ऊपर तांकर क्वेश्चन से करथिले. तेणु करी तांको गोटे पॉलिटिकल थियोरिस्ट कहि कि कहा जाई थाए. देन fourth question is here the materialist conceptions of history views history माने materialist conceptions of history को केमती प्रकार रे देखै थाए. materialistic conceptions माने वस्तुवादिता इतिहास को क्यों भावरे प्रमाणित करी थाई. So the answer is here the materialistic conceptions of history views history as a creation of man subject to empirical laws. माने इतिहास रो वस्तुवादिता जनित व्यू बा चिंतन इतिहास को केमती प्रकार रे देखाई थाए एक एम्पिरिकल लॉ साम्राज्य विस्तारकारी आईन आकार रे यह मनीषर साम्राज्य विस्तारकारी आईन आकार रे यह इतिहास को देखाई थाई. तापरे फिफ्थ क्वेश्चन. The fifth question is here: who among the following is called father of liberalism? एमानंग मध्यरु कहा को liberalism रो father कहि कि कहा जाए. So the answer is here John Locke. John Locke is called father of liberalism. Then the sixth question. The sixth question is here: who among the following is not a post-colonial theorist? एमानंक मध्यरु किए पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट नुहे. फर्स्ट इज पार्थ चैटर्जी, second is Sudipta Kaviraj, third is Karl Marx and fourth is Homi K. Bhabha. So the answer is here obviously समस्ते मॉडर्न थियोरिस्ट आकार रे देखा जाउछंती जणे जण को ही छाड़ी की जे कि होछंती हमर कार्ल मार्क्स जे कि प्री कॉलोनियल थियोरिस्ट अटंती पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट
नुहंती. Then the seventh question. The seventh question is here. With whom would you associate cave allegory? Cave allegory को का सहित associated करी हबो? Then the answer is here Plato. With Plato we would associate cave allegory. Then the eighth answer is what is the central assumptions of modernization theory? Modernization theory रो केंद्र तत्व बा केंद्र लक्ष्य कौन? ऑप्शन नंबर 1 एमानक मध्यरु गोटे भी नुहे. ऑप्शन नंबर 2 all societies should follow the path which modern western states have adopted in order to become modern. All societies should follow different paths to become modern. And fourth is all societies should adopt traditional modes of productions. So what will be the answer? What is the central assumptions of modernization's theory? The answer is here option number 2. All societies should follow the path which modern western states have adopted in order to become modern. माने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी रो मूल लक्ष्य सेंट्रल लक्ष्य होची कि जे समस्त समाज समस्त सोसाइटी वेस्टर्न स्टेट्स माने जेमिति सोसाइटी एडॉप्ट करी अछंती सेही भलिया एडॉप्ट कले से माने मध्य मॉडर्न बा आधुनिक हेई परिबे. Then the ninth number is here. It is the code system question. 9th and 10th question is code system question. The South Asian Free Trade Agreement SAFTA कहीकि कहा जाए recently news पे भी आसीथिला. The South Asian Free Trade Agreement has not been a success because the South Asian Free Trade Agreement has not been a success because South Asian Free Trade Agreement काहीकि सक्सेस हेई पारिला नाही. तार कारण तीनोटी दिया जाइछि. नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज, लैक ऑफ बायोलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड पॉलिटिकल हर्डल्स. एमानक मध्यरु केउ गुडी को हबो सेटा हमें एई ऑप्शंस गुडी करू जानिबा. ऑप्शन नंबर ए इज 1 2 and 3 only. Option number B is 1 2 and 3. Option number 3 C is 1 and 2 and option number D is 1 and 3. So here the answer is 1 and 3. माने SAFTA रो सक्सेसफुल हेबार अनसक्सेसफुल हेबार रीजन होची नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज. माने जो आमर साउथ एशियन कंट्रीज गुड़िक रही अच्छा से एक्सपोर्ट बेस टी नैरो बा संकीर्ण मनोभाव जनित रही अच्छी. ता सहित पॉलिटिकल हर्डल्स माने बहुत प्रकार राजनीतिक बाधा मध्य आसिला. तेणु करी साफ्टा सक्सेसफुल हेई पारला नाही. देन 10th question is same like as the 9th question. It is the code system question. So what is the question is under the Indus Water Treaty. It have recently news re asichi. Indus Water Treaty, India has been given the exclusive right over the rivers of dash. इंडस वाटर ट्रीटी कहीकि गोटे ट्रीटी आमर घोषणा करा जाइछि विशेष करी पाकिस्तान आउ इंडिया भितरे. तो सही IWT इंडस वाटर ट्रीटी रे इंडिया रो क्यों क्यों नदी गुडी को ऊपर अधिकार रही अछि. 6टी नदी एठी रही माने इंडस रो ट्रिब्यूटरीज जो रही अछि सिंधु नदी रो ट्रिब्यूटरीज जो रही अछि सेटा होछि चेनाब, रावी, बीज, इंडस, सतलुज एंड झेलम. तो एमानक मध्यरु केउ केउ नदी गुडी को ऊपर केवल भारत रो अधिकार रही अछि. ऑप्शन नंबर A 1 2 and 6, ऑप्शन नंबर B 2 3 and 5, C 4 3 and 2 and D 6 4 and 1.
So the answer is here क्यों क्यों नदी गुड़िक हम ऑप्शन नंबर बी 2 3 and 5 2 राबी 3 ब्यास and 5 सतलुज এই তিনোটি নদী উপরে আইডব্লিউটি অনুসারে ভারতর অধিকার রহি অছি। Then the 11th question. The 11th question is here. Iqbal's idea of community is Iqbal's idea of community. Iqbal's a political thinker. We already know about him in our graduation's level. ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଇଡ଼ିଆ से कम्युनिटीर क्यों प्रकार आइडिया प्रदान करी अछंती से कम्युनलिज्म उपरे तांकर थ्योरी प्रदान करी अछंती तो से कम्युनिटी को केमती प्रकार रे माने डिस्क्राइब करी अछंती। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज हियर ट्रांसनेशनल। द कम्युनिटी इज transnational. Iqbal is ideating or viewing that the community is transnational. Then the 12th question. The 12th question is here. Marshall Plan was meant for. Marshall कर plan रो अर्थ कौन रही थिला? Marshall's plan was meant for the option number 2 rebuilding the economics of North American countries. Rebuilding of economics of North American countries. मार्शल कर प्लान कौन रही थिला? नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज मानकर इकोनॉमी बा अर्थनीति को पुणी थरे पुनर्गठन करिवा तांकर प्लान रही थिला। Then question number 13. The question number 13 is given here one statement. It would a statement दिया जाइछि तो सही statement who gave this statement in constituent assembly debate कहि के कहा जाइछि माने भारत रो संविधान प्रणयन सभा रे एही स्टेटमेंट डिबेट आकार रे बा तांकर तर्क आकार रे किए प्रदान करिथिले। स्टेटमेंट होछि but in the long run it would be interest of all to forget that there is anything like majority or minority in this country and that in India there is only one community. एही स्टेटमेंट किए प्रदान करथिले तांको तर्करे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा संविधान प्रणयन सभा मध्यरे। आंसर इज हियर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यही स्टेटमेंट तांकर प्रदान करथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे तर्क तर्जमा करला बेले जेतले हमर कॉन्स्टिट्यूशंस रेडी होतला से समय रे तांकर ई स्टेटमेंट से प्रदान करिथिले। देन 14th number question. The 14th question is India has Kalapani and Susta territorial dispute with dash. भारत कालापानी एवं सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट वर्तमान कहा सहित रही अछि। ए समस्त जिनसटी हमर इंटरनेशनल रिलेशंस रे भी आसुची एवं ता सहित वर्तमान रो खबर मध्य अटे माने वर्तमान रिसेंट न्यूज रे भी ए समस्त जिनस रही। कालापानी एवं सुस्ता रे जो टेरिटोरियल भौगोलिक डिस्प्यूट हमर रही केउ देश सहित रही अछि। So the answer is here नेपाल। नेपाल सहित वर्तमान आमर कालापानी एवं सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रही माने वर्तमान केते माने केते हप्ता होची आमर नेपाल सरकार कोन करी अछंती तांकर जियोग्राफिकल मैप रेडी करी अछंती आ से अनुसार से कालापानी एवं सुस्ता एरिया सुस्ता जोटा कि कालाप नदी ट्रिब्यूटरीज अटंती एई दुई एरिया को तांकर जियोग्राफिकल मैप रे से माने तांकर एरिया कहि कि दर्शाई अछंती तेनु करी नेपाल सहित हमर एई माने बाउंड्री जनित विवाद रही अछि। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th number question is 15th question is
State autonomy is challenged in post Westphalian order because state autonomy is challenged in post Westphalian order because the answer is number 1. In a more interdependent world, national governments are forced to engage in extensive multilateral collaborations and cooperation simply to achieve domestic objectives. State autonomy kaha द्वारा वेस्टफालियन ट्रिटी पोस्ट वेस्टफालियन ट्रिटी ପରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଟୋନୋମି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣୁଛି ଇନ୍ ଅ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଆକାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣୁଅଛି ତା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଶାସକମାନେ forced to engage extensive multilateral collaborations and cooperation simply to achieve domestic objectives ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଶାସକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଟି କୋଲାବୋରେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋପରେସନ୍ସ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଅଛି in order to state autonomy ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆକାରରେ post Westphalian ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି then the 16th number the 16th question is who amongst the following is the exponent of negative and positive peace ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ नेगेटिव एवं पॉजिटिव पीस एक्सपोनेंट किए सो द आंसर इज हियर जॉन Galtung is the exponent of negative and positive peace. Then the 17th question is here. Who among the following would you associated with the concept of tyranny of majority? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ tyranny of majority ବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଜନିତ କନସେପ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତ answer is here J.S. Mill is given the concept associate the concept of tyranny of majority ଯାହା କି ସେ କାହା ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ and then the 18th number question 18th question is that who among the following talked about the third dimensions of power ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ third dimension of power ବିଷୟରେ କହିଅଛନ୍ତି the answer is here Stephen Lukes third dimensions of power ବିଷୟରେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମେ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार गोटे कोल्ड वार देखिथिला कोल्ड वर्ल्ड वार रे आमे 2 डायमेंशन ऑफ पावर्स देखिथिला बट वर्तमान आमर सिचुएशन एमती रही अछि जहा कि स्टीवन ल्यूक्स डिस्क्राइब करि अछंती वर्तमान कोन होछि थर्ड डायमेंशंस ऑफ पावर मध्ये हमको रिसेंटली देखिबा पय मिलुछि फॉर एग्जांपल वर्तमान चाइना गोटिए थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर आकार रे पृथ्वी रे विशेष तार गुरुत्व दर्शाउ अछि देन द 19th question the 19th number question is here who is the author of the book The Rights of Men 1791 रे प्रकाशित होइतिबा पुस्तक रो रचयिता किए आंसर इज थॉमस पेने द राइट्स ऑफ मेन बुक टी लिखिथिले केउ मसिया रे पब्लिश होइतिला 1791
Then the last question. The last question is 20th number. Who is the author of the book The High Caste Hindu Woman? The High Caste Hindu Woman book ro रचयिता किए? Answer is obviously the great Pandita Ramabai. Sorry, Pandita Ramabai. Option number 3, Pandita Ramabai is the author of the book The High Caste Hindu Woman. So आज ପାଇଁ ଏତିକି. थैंक यू. प्लीज भिडियोटी शेष जाए देखि थैंक यू सो मच. लाइक्स करुथिबे ए वीडियो को एवं वीडियो को शेयर मध्य करुथिबे एवं जो माने चैनल टी को नुआ आसी से माने सब्सक्राइब करुथिबे. थैंक यू. कीप सेफ, कीप स्टडी. बाय बाय.